तो यार मैंने अपने करियर में बहुत सारी एमेच्योर स्क्रिप्ट्स पढ़ी है फ्रॉम स्क्रीन राइटर्स जो स्टार्टिंग आउट एक दो स्क्रिप्ट्स लिखी है उन्होंने जस्ट स्टार्टेड द प्रोफेशन एंड ऑलमोस्ट एवरी स्क्रिप्ट इज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फेवरेट राइटर और द फिल्म मेकर व्हिच इज कंप्लीटली नॉर्मल. बट ये जो डेरिवेटिव स्क्रिप्ट्स होती है ना, दे ऑफन फॉल इनटू देयर ओन ट्रैप्स, लूजिंग दैट मिस्ट्री एंड चार्म दैट द ऑडियंस क्रेव्स. मुझे वो स्क्रिप्ट पढ़ के समझ आ जाता है कि यार ये तो इस फिल्म से इंस्पायर्ड है, या ये उस फिल्म से इंस्पायर्ड है, या ये उस हीरो का फैन है, या उस राइटर का फैन है. When I was starting out, even I was always influenced by my favorite filmmaker of the season, and my writing style would change accordingly. After multiple rejections from producers, I made a conscious decision to stop watching films altogether and focus on my originality instead. So I began looking externally. I kept an eye on the pain points in the society. कुछ पैटर्न दिख रहा है सोसाइटी में, क्या प्रॉब्लम चल रही हैं. मैं अपने दोस्तों के साथ बातें कम और इंटरव्यू ज्यादा करने लग गया था कॉन्वर्सेशन में. जिससे भी मिलता था उनसे बस ये फिगर आउट करने की कोशिश करता. मेरी लाइफ ही बन गई थी. ये सब करने से मुझे बहुत ऑब्जर्वेशन मिली कि व्हाट ऑल इज रॉन्ग इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी. आज की प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं जो मूवीज में शायद हमें देखने को नहीं मिल रही है. वो कौन से स्टोरी वर्ल्ड्स है जो आज तक हमने एक्सप्लोर नहीं किए हैं. वो कौन से मेटा थीम्स है दैट हैव बीन अफेक्टिंग सोसाइटी एट लार्ज. जब मैं लोगों से ऐसे बात करने लगा तो ये सारी ऑब्जर्वेशन मेरे पास आने लगी. एंड देन आई डिसाइडेड आई पुट माय ऑब्जर्वेशन थ्रू द टेस्ट ऑफ टाइम एंड यूजुअली अ ईयर और सो, कि देखते हैं कि ये पेन पॉइंट्स एक्चुअली टेम्परेरी हैं या फिर दे आर लाइकली टू रिमेन रेलेवेंट फॉर द नेक्स्ट 5-6 years. एंड देन आई आल्सो लुक इंटरनली टू सी व्हिच पेन पॉइंट्स आई पर्सनली रेजोनेटेड विद. मुझे एक पर्सनल स्टिक भी तो चाहिए ना. दैट्स व्हाई आई विल बी इंक्लाइंड टू राइट इट फॉर द नेक्स्ट 2 years, राइट? सो आफ्टर फिगरिंग आउट व्हाट पेन पॉइंट्स रेजोनेटेड विद मी पर्सनली, आई ट्राई टू वीव अ स्टोरी अराउंड. एंड वंस आई न्यू व्हाट आई वांटेड टू से, I focused on how to see it originally without drawing too much from other films. And once you're done figuring out the art bit of it, then comes the craft. Craft is essentially telling a story in a way that creates maximum impact and engagement. And that's when I started asking myself these tough questions. Can I reduce this scene to a single line? Can I pitch an equally compelling alternate scene to the producer? Can I add 6 jokes on this page? There's a whole journey before a writer actually begins to think about these questions in their practice. And when I started asking these questions to myself, I naturally began delving deeper into the screenwriting theory. हर कहानी के पीछे ना एक मैथ होती है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, और ये थ्योरीज वही मैथ एक्सप्लेन करती है. बहुत महान स्कॉलर्स ने स्क्रीन राइटिंग की अलग अलग थ्योरीज बनाई है, टेक्निक्स बनाई है, जो आपको हर हिट फिल्म में देखने को मिल जाएंगी, चाहे हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड हो. There's Sitfield, there's Robert McKee, there's Paul Gulino with the sequence approach. There are tons of screenwriting theories out there. These screenwriting theories empowered me with credible frameworks to tell my stories. With enough practice, I started producing quality original writing that now resonates with the audience. What is my superpower? It's nothing fancy. It's the confidence that I can write in any genre, within any budget, accommodate logistical limitations, and still deliver. All because I dare to ask seemingly impossible questions I mentioned. Let me know in the comments if you'd like to know more about the screenwriting theories. What is your superpower? I'd love to know that. And cheers, guys. I'll see you in the next video. Bye-bye.